अपने बारे में कुछ बताइए। Sir, my name is Shweta Sarastoki. I'm from Barabanki. And coming to my educational qualification, I completed my high school from Viral Children's Academy, Barabanki, and my intermediate from JS Niketan, Barabanki. I have completed my polytechnic diploma from my hometown, from Government Polytechnic, Barabanki, in diploma in electrical engineering. From last year, I am preparing for government exams, and from last 4 months, I am having apprenticeship in PGCIL. Why you choose electrical branch only? Sir, I was interested in electrical branch from my childhood. I saw my cousin in making some stuff from electrical related things, so I was fascinated to these things, and I just wanted to be in electrical engineering background, so I chose So have you electrical visited engineering. any industries till now? Yes, sir. I am having apprenticeship from PGCIL, Power Grid Corporation of India Limited. Okay, from PGCIL. Yes. Okay. Why you want to join Barc? Sir, can you please repeat? Why you want to join Barc? Sir, I qualified the exam that For that only. I was. If you will qualify other examinations, so you will leave the Barc and join others. No, sir. I mean to say this. Just I want to get a government job only. That's why I'm preparing for many exams, and I am giving all the exams, and I am qualified for Barc exam. Suppose you get qualified for other examination also. Suppose like any steel plant or for power grid. So you then what will be your goal? To leave that Barc, or you will No, continue with Barc after sir, 1 year? it I'm depends. asking. After joining, Yeah. once you will join the Barc, after 1 year, you will get selected for PGCL or other examination for. So what you will do then? Sir, we continue in Barc. Sure. Yes, sir. So you will not join PGCL. No, sir. Why? You work there, Sir, PGCL. Sir, because Barc have a better background than PGCIL, so I will join Barc also. Only. Okay. So what is the background of Barc? Sir, Barc is a central government job, and also it comes under the Department of Energy, Atomic Energy. Then it's a bigger and better opportunity for me than PGCIL. Then I will continue in Barc also. Okay. So what will be your job responsibility in Barc? Sir, as a scientific assistant, I have to do different works like learning some different things related to nuclear plants and safety regulations, and also I have to learn so many things related to the nuclear power plants, and I really don't know more about it. So Okay, Shadank, it's from my side. Now for technical round, I'm handing over this to Kunal sir. Please continue, sir. Shweta, so what are your favorite subjects in technical? sir, my favorite is measurement. Sorry? Sir, measurement. Any more? Sir, and machine also, sir. और कोई? Electrical machine. Sir, network theory. Power system. Okay. And utilization of electrical energy. Okay. Ji. You told that Barc is superior than power grid. Do you know what is the role of the power grid? Sir, power grid is a company generating power grid is like a company generating having generating stations and transmission stations and providing electricity to the consumers. Power grid having generating a station, then what is the role of NTPC? NTPC also having generating stations. So what is the main role of power grid? Power grid, sir, is a Navratna company collaborated with the central government,
and it's having renewable sources like solar power No, plants. I'm asking what is the purpose? The purpose is to deliver the electricity to the consumers. Okay. Then how Barc becomes superior than power grid? I can't explain this. Okay. Sorry, sir. So why we choose a magnetic field instead of electric field for design of any electrical machine? Sir, Do you know can any electrical machine which works on the principle of electric field? yes, sir. But tell me. Sir, in DC machine we are generating oh, sorry, sir. Here we are generating magnetic field there. Sorry, sir. Let me explain. We are, sir. आपने क्या बोला फिर से बोल दीजिए. Why we prefer magnetic field instead of electric field for design of any electrical machine? Do you know any electrical machine working on electric field? Electric field. Sir, sorry, sir. I'm not remember. I can't recall this. So what is the difference between permanent magnet and electromagnet? Sir, permanent magnet have the ability to retain its magnetism, and the electrical magnets are just magnet. When the electric field is electricity is applied on them, then it behaves like a magnet. Okay, then why we prefer electromagnet in electrical machine? Why you not prefer permanent magnet? Sir, permanent magnet having having some problems like they have decaying nature in their magnetic fields, and the electromagnet we can use electromagnet whenever we want. We can create them. No, having decaying nature we can change now. After some time we can replace that permanent magnet. सर बट इलेक्ट्रोमैग्नेट सर हम लोग सर जब भी चाहते हैं सर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उसको दे करके उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट ही प्रेफर करते हैं. परमानेंट मैग्नेट सर बल्कि भी हो जाएंगे, थोड़े से भारी हो जाएंगे. Any other advantage of electromagnet over permanent magnet? सर डिकेइंग नेचर होता है और थोड़ा बल्कि मशीन बन जाएगी हम लोगों की. Okay. और सर Can you define equivalent circuit? यस सर. Tell सर me. इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ मशीन. सर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ विच मशीन? Yeah, in any respect. Sir, equivalent circuit in we just represent any element with the single line diagram, then it is called equivalent circuit. Single line diagram. I think both are different. Single line diagram and equivalent circuit both are different. Means the symbols of that diagrams we just represent with the. Okay. Can you draw the equivalent circuit of transmission line? Yes, sir. Okay, do it. Sir, we are having like XL, R, and C. And where is conductance? Sir, in parallel. Draw it. What is the physical significance of conductance in equivalent circuit of transmission line? Sir, conductance is like leakage from the insulators. Reciprocal of resistance. Okay. And what is the what does the inductance represent there? Inductance represents the inductance sir, because of the AC circuit, the inductance in the transmission line.
Do you know damping torque in measurement? Yes, sir. What is damping torque? Damping torque, sir, makes the system stable, and it by the use of damping torque, we can die out the oscillation Why of the oscillation pointer. comes in the instrument? Sir, in pointer type instrument, when the torque is applied, the pointer does not be stable in a place. Then it's rotate around the position. It's called the it's called Yeah, the I'm not oscillation. asking what is oscillation. I'm asking why oscillation comes in instrument. Sir, oscillation is due to their inertia. Yeah. So oscillation is also in synchronous machine. Yes, sir. We So call it like how we sir, provide damping there? sir, with the use of flywheel and damper windings. Damper winding. What is the purpose of damper winding? Sir, damper winding is just like additional winding in rotor, just like squirrel cage rotor like. A squirrel cage Damper rotor. winding, yes, sir. Like short circuit Where we provide damper winding? on rotor, sir. On rotor. How it Yes, works? sir. How it damp out the oscillation? Sir, it generate a flux in opposite to the oscillations and remove the oscillations. It generates flux. So is there any effect of temperature on reading of instrument? Yes, sir. How does it affect? Sir, sometimes the spring constant affected by the temperature and the spring size increase or decrease. Suppose a spring constant is affected by temperature. Yes, sir. So then how can we rectify that effect coming due to temperature in reading of instrument? सर टेम्परेचर एरर सर जो हम लोगों के इंस्ट्रूमेंट्स में होती है सर, जैसे कि हम लोगों का परमानेंट मैग्नेट कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, तो सर हम लोगों की जो कॉइल होती है सर, उसका टेम्परेचर बढ़ने पे उसका रेजिस्टेंस तो बढ़ जाता है, बट लेकिन सर जो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसकी वजह से वो स्प्रिंग कांस्टेंट थोड़ा कम हो जाता है। तो सर ये दोनों इफेक्ट काउंटर इफेक्ट हो जाते हैं, तो स्प्रिंग पीएमएमसी में सर ये Do you know हार्मोनिक इफेक्ट swamping resistance? थोड़ा कम होता है सर। Do you know about swamping resistance? स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, यस सर। What is the purpose? Yes, sir, for yes, sir, for thermal error, sir. I think same Yes, it rectify the effect of temperature. yes, sir. Okay. What is the difference between indicating and integrating instrument? Indicating instrument, like online instrument that indicates the measured quantity at the same time, and the integrating instrument, it just like recording instrument, like energy meter, they just record the reading with respect of time. There is a creeping phenomena in energy meter. Yes, sir. What is this? When the pressure across the no voltage coil is more than 110%, then the creeping error is like no load rotation of the disk, that is the disk is in energy meter that's rotate on no load, that's called creeping error. How can rectify? We can rectify it by drilling vertically opposite holes on energy meter, and also we can introduce a iron piece at the disk, at on the disk. Okay. What is the working principle of potentiometer? Potentiometer is a device used to measure the unknown EMF in the form of a known EMF. It's like Wheatstone bridge. We are doing EMF balancing of the known source with the unknown source. Okay, can you tell me that what is the purpose of core in transformer?
core is like it's like magnetic path for the flux lines. Mhm. It's continue the magnetic means is transfer the energy in the form of magnetic flux to the primary from primary winding to the secondary winding. If you remove that core, instead of magnetic material, if you use non-magnetic material, then we can tell that hysteresis loss will be 0. Yes, sir. Then why we don't use non-magnetic material like aluminum, copper? Non-magnetic सर उसमें सर फ्लक्स ही जनरेट नहीं होगा तो सर पावर ट्रांसफर नहीं हो पाएगी. फ्लक्स जनरेट करने के लिए क्या चाहिए? What is the requirement for the generation of flux? सर current carrying conductor and relative motion, sir. Current carrying conductor and Sir, wait, sir, magnetic flux is generated by a current carrying conductor only. then you are saying na Sorry, कि sir. if we Wait, I said something wrong. सर आपने क्या पूछा फिर से बोल दीजिए. I'm asking why we are using magnetic material in case of transformer. If we use non-magnetic material like aluminum and copper, then hysteresis loss will be 0. Then why we are not using non-magnetic material? Sir, hysteresis loss, sir, depends on resistivity also. Resistivity, eddy current loss or hysteresis loss? Sir, hysteresis loss and eddy current both depends on resistivity. Both depend on resistivity. Yes, sir. Then we can say that if resistivity is less, then hysteresis loss will be more. No, sir, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया सर. Is there any effect of conductivity on eddy current loss or hysteresis loss? Yes, sir. Which loss get affected by conductivity? Sir, eddy current loss. Then resistivity is the reciprocal of conductivity. Yes, sir. Then only eddy current loss will be affected. Yes, sir. Sorry, I said wrong about hysteresis loss. Now come to the question, same question. What I am asking, why we don't use non-magnetic material? सर जो वो कोर्सिविटी और सर ससेप्टिबिलिटी होती है सर जो जो बीएच कर्व हमारा बनता है सर वो मैग्नेटिक मटेरियल के लिए बनता है. BH curve. Can you draw the BH curve of magnetic material? Yes, sir. Do it. Sir. Now draw it for non-magnetic material. Sir, maybe a straight line passing the center. Is it correct? Yes, sir. Maybe. You are saying that there will be no BH curve for non-magnetic material. Now you are drawing a linear curve. सर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में सर रिटेंटिविटी तो नहीं होगी. तो सर वो तो स्ट्रेट लाइन ही what is फॉलो the करेगा purpose मतलब of retentivity? What is the role of retentivity? सर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड मतलब सर थोड़ा मैग्नेटिज्म होता है सर उसको थोड़ा सा अब्सॉर्ब करना मींस थोड़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना. अगर हम लोग Can we say that due to retentivity only, B, that is flux density, lacks
Magnetomotive force. Yes, sir. Can we say that? Yes, sir. And only due to this, hysteresis loss occurs. Yes, sir. Then what is the requirement of retentivity? If a non-magnetic material having a linear curve, that is far better than a BH loop that you are drawing for a magnetic material. Yes, sir. Do you understand what I am asking? Yes, sir. Okay, sir. Shvetash, uh, you know about power generation? Ji, sir. Okay, tell me what are the types of power plant? Sir, thermal power plant, or sir, steam, thermal power plant, also called steam power plant, and hydro power plant, solar power plant, wind power plant, and geothermal, ocean thermal, and geothermal, ocean thermal, and mm, sir, solar power plant, I said, na? Okay, leave that. Which power plant gives Solar. more power at this time? More power generation. Means from where we are getting more power? Sir, from thermal power plants. From thermal. How much percent? Sir, about 50%. 50% or 70%? I think 50 to 70%. I Okay, don't leave that. exactly Leave know. that. Leave that. Okay, can you explain the different components of thermal power plant? Brief of, not explain. Yes, sir. Can you brief that? Yeah, tell me. Yes, sir. Sir, we have Your voice. thermal power plants. We have यूज करते हैं उसमें डिफरेंस स्ट्रिंग के डिफरेंट वोल्टेजेस सर होते हैं तो सर अगर डिफरेंट वोल्टेजेस रहते हैं तो सर बॉटम की जो स्ट्रिंग होती है सर उस पर सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है जो जिससे वो स्प्रिंग ब्रेक डाउन हो सकती है तो सर हम लोग चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज का सब पे सारी मतलब सारे डिस्क पर इक्वल हो तो सर उसी को स्प्रिंग एफिशिएंसी बोलते हैं Okay. What is the pickup value in case of relay? सर पिकअप वैल्यू सर द वैल्यू एट विच द रिले change this contact position from N node to NC, NC to N. It's called pickup value. And what is reset value? So preset value we can change the pickup value by setting like Overreach and underreach. Have you heard about that? yes sir. What is this? सर ओवर रीच में सर रिले अपनी सेंसिंग जो उसकी सर पिकअप वैल्यू होती है उससे पहले परफॉर्म कर लेता है अपना ऑपरेशन सर उसको ओवर रीच बोलते हैं और सर अंडर रीच में सर जो उसकी पिकअप वैल्यू होती है तो उसके बाद में भी परफॉर्म नहीं करता अपना ऑपरेशन सर उसको अंडर रीच बोलते हैं What is the purpose of negative sequence relay? नेगेटिव सीक्वेंस रिले सर अल्टरनेटर में सर अनबैलेंस की कंडीशन होती है तो सर नेगेटिव सीक्वेंस रिले सर उसको डिटेक्ट करता है तो अनबैलेंस कंडीशन के लिए लगाया जाता है Okay. Okay. श्वेताशु, तो यस इंटरव्यू आपका हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं फीडबैक की। फीडबैक में सबसे पहला चीज, बॉडी लैंग्वेज आपको थोड़ा सा पुअर रहा। बॉडी लैंग्वेज पुअर रहने का मतलब हुआ नेक मूवमेंट आपका बहुत ज्यादा था, ठीक है। आपकी आंखें दाएं बाएं जा रही थी, पहला चीज। दूसरा चीज, जो एचआर राउंड में आपने आंसर दिया वो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था। वैसे एचआर का ज्यादा रोल है नहीं, लेकिन फिर भी आप ऐसा कुछ आंसर दे दें जिससे सीधा सा पूरा आपका इंटरव्यू ही खराब हो जाए, तो वो दिक्कत वाली बात है। नहीं, आप किसी दो कंपनी को, एक को बेस्ट और एक को वर्स्ट नहीं बता सकते। पहला चीज, आपको जस्टिफाई करना है कि बार्क क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बोलिए रिसर्च में इंटरेस्ट था, कुछ भी बोलिए, लेकिन ये थोड़ी ना बोलेगा पीजीसीआई जो है वो उससे बहुत बेटर है बार्क। ये वर्ड आप किसी भी कंपनी के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ओके सर इसके बाद तीसरा चीज है कि जैसे जैसे आपका बॉडी एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन पहले बहुत सही था, जैसे जैसे आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस बरसने लगे आप पे, वैसे वैसे आपका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होने लगा। नहीं, आपका आंख का जो कलर था वो चेंज होने लगा,
ठीक है, बिल्कुल मैं तब से वही रीड कर रहा था। तो जैसे ही कलर चेंज होने लगा तो इसका मतलब हुआ कि आप अब डिप्रेस हो रहे हैं, और जैसे ही सामने वाला समझ गया डिप्रेस हो रहे हैं तो वैसे आपको और डिप्रेस करेगा, ठीक है, और आपका इंटरव्यू हो जाएगा खराब। तो सेकंड मॉक में इन सब पे आपको वर्क करके आना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आपको नंबर ऑफ, कब है इंटरव्यू आपका? सर हमारा सर 8 मार्च को। 8 मार्च को है। अभी आपके पास टाइम है कि आप 4 इंटर मॉक और दे सकते हैं, है आपके पास इतना टाइम सफिशियंट। और आप जितने नंबर ऑफ मॉक्स दीजिएगा, आपका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत कुछ बोल देता है, उस एक्सप्रेशन को आपको सुधारना है, और वो तब सुधरेगा जब आप नंबर ऑफ मॉक्स दीजिएगा। हर तीसरे दिन पे आपको मॉक देना है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हर दूसरे तीसरे दिन पे आपको एक मॉक देना है। ये प्लान कीजिए, ठीक है। तब जाके आपका इंटरव्यू बहुत सही निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? बाद बाकी टेक्निकल सर बताएंगे। टेक्निकल में बेटा देखो क्या है कि तुम अपने स्टेटमेंट में फंस ज्यादा रहे थे, थोड़ा सा कंफ्यूज ज्यादा हो रहे थे, है ना। अपना ही स्टेटमेंट जो तुमने बोला बार बार उसको फिर करेक्ट कर रहे हो, फिर रेक्टिफाई कर रहे हो, फिर बोल रहे हो शायद ये स्टेटमेंट गलत है, फिर उसके बाद का स्टेटमेंट गलत है। ये वहां पे नहीं कर सकते रियल टाइम में, ठीक है। यहाँ पे तो मौका है, आपने बोल दिया कि चलो ठीक है वो प्रीवियस स्टेटमेंट गलत था, ये सही है। तो आप गलत स्टेटमेंट से बचे। या तो आपको नहीं आता तो डायरेक्ट आप सॉरी सर बोल ले, रेदर देन कि आप उस चीज को ब्लफ करें और इधर उधर रिलेट करते रहे, फिर उस पॉइंट पे दोबारा वापस आए थोड़ी देर बाद। इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना। जैसे आप जब बैठ के इस वीडियो को देखोगे ना, जैसे मान लो वीडियो आपको सेंड किया गया, सपोज दैट आप बैठ के जब वीडियो को देखोगे सोचोगे इसका आंसर तो मुझे आता था, बट मैं दे कैसे नहीं पाया, मैं गलत कैसे बोल दिया। तो ये चीजें तब समझ में आएंगी, आपको ये लगेगा कि उस समय इसलिए नहीं देता है जब आप, क्योंकि इंस्टेंट रिप्लाई जो होता है ना, इंस्टेंट रिप्लाई, जैसे हमने आपसे क्वेश्चन पूछा तुरंत से आपके दिमाग में इंस्टेंट टच करना चाहिए वही पॉइंट। जैसे मैंने एडी करंट लॉस पूछा, हिस्टेरेसिस लॉस पूछा, तो जैसे हिस्टेरेसिस लॉस बोला तो हिस्टेरेसिस लॉस का जितना थियोरेटिकल पोर्शन है आपके सब दिमाग में छप जाना चाहिए, वैसा होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए सिर्फ रिवीजन जरूरी है, और जितना ज्यादा मॉक दोगे, थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओगे चीजों से कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि घर पे बैठ के सब कोई पढ़ाई करते हैं, है ना। घर पे बैठ के सबने टीवी पे शेर देखा है, शेर देखा है, जंगल में जाके देखो तब ना अलग फील आता है। बात समझ आ रही है। तो घर पे बैठ के यस। पढ़ाई करना अलग चीज होता है, एक रियल टाइम में मॉक देना अलग चीज होता है। आप किसी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है बट आप रिप्लाई नहीं कर पाते हो, इंस्टेंट रिप्लाई नहीं कर पाते हो, वो चीजें यहाँ से थोड़ी सी ठीक होते जाती है। तो आप इस पे वर्क करो थोड़ा, ठीक है। और अपना नेक्स्ट, आपके पास नंबर होगा ना, जो कांटेक्ट नंबर जहां से आप बुक करते होंगे, ठीक है ना, वहां से आप बात कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, उनसे अपना शेड्यूल नेक्स्ट बात कर लीजिएगा, ठीक आपका है। कोई डाउट?